If you guys think that Hitler was the cruelest man in the history, then I would like to correct you guys, because today into this video we're gonna talk about the number of a man who actually crossed the limit of a cruelty, और शायद इनकी डिक्शनरी में kind, mercy, humanities जैसे वर्ड्स ही नहीं थे. This world is full of a tragedy. मतलब अलग अलग फॉर्म में जेनोसाइड हो सकता है, वो राइट हो सकता है, किलिंग हो सकता है, असैसिनेशन हो सकता है, या फिर वॉर हो सकता है. बट डू यू नो द रियल evil lies within the architect of these inhuman practices. This video is going to be about all those men जिन्होंने cruelty की उस लिमिट को पार कर दिया that no one could else fathom about it. और इन सभी ने humanity नाम का शब्द जो है वो अपनी कभी जिंदगी में सुना ही नहीं. Hey guys, this is Krati and आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ लीडर्स की जो पिछले 100 सालों में आए और इन्होंने इतनी तबाही मचाई कि अपना नाम ये हिस्ट्री की बुक में खून से लिखा गया. This person was a chancellor of Germany from 1933 to 1945 until Second World War खत्म नहीं हो गया. Adolf Hitler was the founder of a Nazi party, perhaps most intelligent, creative, and of course cruel man in the history. He is the person who is largely responsible for the World War II and Holocaust that happened in Germany. इस पर्सन के हिसाब से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो Jews की तरफ से हैं. So it's far better to kill them. And to eliminate these Jews, his actions resulted into killings of more than 50 million people. That is huge. And on 30th April 1945, Adolf Hitler ने सुसाइड कर लिया. इतने ज्यादा क्रूएल इंसान को सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ी? Well, we will see into our upcoming video. Number 2, Joseph Stalin. This person was the leader of a Soviet Union from 1922 to जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, क्योंकि एक डिक्टेटर को उसकी जगह से केवल 2 कंडीशन में हटाना पॉसिबल है. या तो वो खुद उस प्लेस से हटना चाहे, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाए. As a young man, Stalin एक रॉबर एंड एक assassin थे. Almost 30 years in Soviet Union, he ruled with terror and violence. There's one of the estimation जिसमें ये clearly दिया गया है कि under Stalin rule 1.5 German women का rape किया गया था and almost more than 20 million people were killed. You know what irony की बात क्या है? इस पर्सन को 1945 and 1948 में Nobel Peace Prize के लिए नॉमिनेट किया गया था. Like seriously? Third one, Pol Pot. This was one of the Cambodian revolutionary and इनके हिसाब से इनको Cambodian civilization खत्म करना था और एक new age start करनी थी. Not only this, Pol Pot केवल एक ऐसा व्यक्ति है पूरी हिस्ट्री में जिसने mass genocide का ऑर्डर दिया था, वो भी अपनी खुद की कंट्री में. But wait a minute. Here's something to tell you about his cruelty. This person was fond of keeping skull of a dead man. Not only this, he used to keep newborn babies and used to taunt them limb by limb. To the list of a cruelest man in history, we are going to have a 4th person named Saddam Hussein. He was dictator of Iraq. This person was dictator of Iraq from 1979 to 2003. During his reign, he is authorized with a countless number of attacks on its people. इनकी policies कुछ इस तरह की थी कि इनके टाइम पर 2 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी. Not only this, he had actually different ways to kill people, such as chemical attack, eye gouging, beating, giving them a tremendous shock. इस पर्सन ने इन सभी कारनामों के लिए वीडियो भी बनाए ताकि जब उसे वक्त मिले वो इन सब को देख के खुशी मना सके. Psycho. Since Saddam was doing all these things into this contemporary world and इसकी वजह से इसको guilty पाया गया and finally इनको फांसी दे दी जाती है. Thank God. And 5th and last one is going to be Idi Amin. Idi Amin was a chief of army staff in Uganda. एक बार प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा सिंगापुर किसी मीटिंग के लिए जाते हैं एंड उसी मौके का फायदा उठाते हुए इदी अमीन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया एंड बिकेम डिक्टेटर ऑफ युगांडा. इसको बुशर ऑफ युगांडा के नाम से भी जानते हैं. इस पर्सन ने क्रूएलिटी की हर हद पार कर दी. जिस पर्सन को भी इदी अमीन मारता था पहले उनको क्रोकोडाइल दिया जाता था. देन he used to kill that person and due to this fact he claimed
to be as a cannibal. This psycho person mutilates one of his wife and फिर बाद में उसके limbs को rearrange करता है. During Idi Amin rule from 1971 to 1979, he killed millions of people and crossed all the limits. So these were some of the most cruel men in the history. But the list doesn't end here. There are many other as well. These people actually butchered the humanity and crossed all the limits that are beyond our imagination. इन्हीं की लिस्ट में हम कई सारे कंटेम्प्ररी लोग जैसे कि ओसामा बिन लादेन, सलात पाशा, अतीफा द हन एंड कई सारे लोगों को शामिल कर सकते हैं. These people left nothing but blood on the pages of our history, and this legacy is upheld by those जिनको लगता है कि इन्होंने जो भी किया वो सही था. Do let me know in the comment section.